Today we will see about sp3 hybridization. This type of the hybridization can be explained by taking the example of CH4 molecule in which there is a mixing of 1s and 3p orbitals. Hello, today we are going to study about the sp3 hybridization. And sp3 hybridizations, this type of the hybridization can be explained by taking the example of CH4 molecule where there is one s orbital and total 3p orbitals are there, and this form sp3 hybridizations. And the valence cells of valence cell to form the 4 sp3 hybridized orbital are of equivalent shape and energy, right? This is the basic principle of hybridizations, where the valence cell that will be formed will be of equal energy and equivalent shape. Okay, and there is 25% s character, 75% p character in each sp3 hybrid orbitals, and the 4 sp3 hybrid orbitals so formed that are directed towards the 4 corner of the tetrahedron. चारों के चारों जो sp3 कैरेक्टर बनेंगे ये इस तरह से बनेंगे कि दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ ए टेट्राहेड्रन. ठीक है, तो टेट्राहेड्रन के कॉर्नर की तरफ ये टेट्राहेड्रन होगा, एंड नाउ दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रन. दे विल फॉर्म लाइक दिस. वी कैन सी the s character is given by the black circle, and the p character is in the different axes like x, y, z. In the different axes p character will combine, then that will form CH4 molecule. ठीक है, formations of sp3 hybridized by the combinations of s, px, py, pj, g and orbitals in the carbon, and formations of CH4 molecule. The structure of NH3 and H2O molecule can also be explained with the help of sp3 hybridization. Okay, तो हम sp3 hybridization की हेल्प से वाटर का स्ट्रक्चर और अमोनिया का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं. In ammonia, the valence cells or outer electronic configuration of nitrogen in the ground state is what? 2s2, 2p1, 2py1 और 2pg1. ठीक है, अमोनिया नाइट्रोजन के अंदर, बिकॉज नाइट्रोजन कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? टोटल नाइट्रोजन कंटेन्स बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 electrons. So 3 electrons are here, and total 2 electrons are in s, and this s should be small. ठीक है, they forgot to make it small, and ये कैपिटल नहीं हो सकता है because you can see over here also the s always it should be small. Okay, so the 1s contains 2 electrons, and over here we can see total 5 electrons are there. That's why the nitrogen contains 7 electrons, and this is the ground state electronic configuration of nitrogen, having 3 unpaired electrons in sp3 hybrid orbitals, and 1 lp of electron are present in 2s. Okay, नाइट्रोजन के अंदर, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा हम एक लोन पेयर दिखाते हैं क्योंकि 2s के अंदर 2s2 स्टेट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? द फॉर्मेशंस ऑफ 3 न्यू बॉन्ड्स. ठीक है, 3 न्यू और बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड. एंड द 3 जो HO है, they will overlap with NH sigma bonds, and we know that the force of the repulsions between the LP and the BP is always more than the force of the repulsion between 2 BP of the electrons. That's why the angle from 109.5 degree it will change to the angle of 107. ठीक है, तो एंगल 2 डिग्री डिक्रीज हो जाएगा because there will be a repulsion between the LP that is present in 2s2 and BP. ठीक है, so the geometry of the shape will take pyramidal shape as shown in this figure 4.13, this figure. ठीक है, so instead of tetrahedral it will become pyramidal and the angle will be 107. तो इसलिए ही हम sp3 से किसकी शेप बता रहे हैं? अमोनिया की. Now we see how we determine the shape of the water molecule. And in case of the water molecule, the 4 oxygen orbitals 2s and 3p undergoes the sp3 hybridizations, forming the 4 sp3 hybridized orbitals, out of which 2 contains 1 electron each, and the other 2 contains a pair of the electron. ठीक है जी. These 4 sp3 hybridized orbitals acquire the shape of the tetrahedral geometry with the 2 corners occupied by the hydrogen atom, while the other 2 are the lone pairs. Okay, and the bond angle in the case is reduced from 109 to 104. तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया? इवन नाइट्रोजन से भी ज्यादा रिड्यूस हो गया क्योंकि इसके अंदर क्या 2 लोन पेयर आ गए. ठीक है, वाटर के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन. नाइट्रोजन पे 1 LP प्रेजेंट होता है, एंड इन CH4 नो LP इज प्रेजेंट. ठीक है, इन दिस केस ऑल आर BP.
दैट्स व्हाई द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम वी शेप। इस तरह का मॉलिक्यूल का शेप बन जाता है, अगर मैं ऐसे बनाया तो ऐसे वी शेप बन जाता है, ठीक है। और यहाँ 2 लॉन पे रिप्रेजेंट होता है, राइट। नाउ वी स्टडी द अदर एग्जांपल ऑफ sp3 and sp2 and sp hybridizations and sp3 hybridizations in C2H4 मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं। C2H4 is C2H6 is methane, मतलब it's an alkane. The formula of alkane is CnH2n+2. Okay, so that's why it's an alkane. इसलिए हम A नहीं लगाते लास्ट में, और it contains 2 carbon, that's why it will called as methane, ठीक। And the molecules of the carbon atoms are assumes sp3 hybrid state of one of the 4 sp3 hybridized orbitals of the carbon atoms overlap axially and with similar orbitals of the other atom to form the sp3 sigma bond, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, sp3 एक जो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, द मेन बॉन्ड बन रहा है, while the other 3 HO of the each carbon are used to forming sp3s bond with the hydrogen atoms, which are discussed in the sections, okay, which we will see in the sections 4.6 that we will see next. And the ethane contains, this is the structure of ethane, okay, this is the structure of ethane. Now it contains ये तो ethane नहीं है। Now let me draw the structure of ethane. It contains 2 carbon, okay, ethane contains 2 carbon, and it now along with the 2 carbon we have 3 hydrogen on each carbon, that we call total number of the carbon will be ठीक है, total number of carbon will be 6. This is ethane molecule, and now if we try to understand this bond, the central bond in the ethane molecule, over here if we see this carbon, okay, and this carbon, now this carbon is having this orbital, and another carbon is having this orbital. Ideally the shape should be the same or the similar. Okay, similarly over here. Now the hydrogen, total hydrogen they will combine will be मैंने इसका देख के स्टार्ट ड्रॉ कर दिया है, ये रहेगा 4.16. Now we understand, and if you want to see the hybridizations in C2H4, this will become the hybridization in C2H4. This will be the diagram, the hybrid orbital diagram. Carbon that will be combined with the 3 hydrogens. Now carbon they will combine by sp3 bonding. This will be the sp3 bond, and that will lead to the formation of sigma bond. Carbon and hydrogen, it will combine by sp3s bond, and that will be, yeah, definitely it will be sigma bond, and this will be the sp3s orbital, and one carbon will combine with the 3 hydrogen, and another carbon will combine with the 3 hydrogen. This will be in the molecule of ethane, and now if we increase the chain, it will continue in the alkane like this. The carbon with 3 hydrogen, terminal carbon will be the 3 hydrogen, and intermediate carbon will be combining with the 2 hydrogens, right? Now we understand the hybridization process in the C2H4, that is alkene, okay. Under C2H4 जिसको हम कह देते हैं alkene, it contains, if we just see the normal diagram, it contains the structure like this, okay, and out of this, one is a sigma bond and another is pi bond. We understand the formations of these pi bond, how these pi bonds are formed. So in the formations of ethene molecule,
one sp2 hybrid orbitals of the carbon atom overlap axially with the sp2 hybridized orbital of the another carbon atom, and if the overlapping is in axial, and this will be term as the complete overlapping. ठीक है, if this is axial, this will be term as the complete overlapping. ठीक है, तो यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे. ठीक है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, while the other two sp2 hybridized orbitals of each carbon atoms are used for the making of sp2s sigma orbitals. तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो तो होंगे कौन से बॉन्ड, sp2s, और ये जो होगा ये कौन सा होगा, sp2 hybridized. ठीक है, so this will be sigma bond, and right, because this is overlapping in axial, maximum overlapping in taking place, पूरा ऐसे overlap हो गया तो axial plane के अंदर overlap हो गया. And the unhybridized orbitals, that is 2px and 2py of each carbon overlap sidewise with the similar orbitals of each carbon atoms to form a weak bond, that is pi bond. तो सिग्मा और पाई के अंदर कौन सा वीक है, पाई बॉन्ड वीक है. सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि सिग्मा के अंदर एक्सियल और कंप्लीट ओवरलैपिंग होती है. ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ा थे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के टाइम पे, कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, कंप्लीट ओवरलैपिंग होती है, which consists of the two equal electrons cloud distributed above and below the plane of the carbon and the hydrogen atoms. Now if we see back how the pi bonds are formed, then you will understand that pi bonds are formed and there is a formations of two clouds. ठीक है, above and below the plane. ठीक है, this is the formations of pi bond, that is actually they are forming by the axis when the axis remains parallel to each other. ठीक है, पाई बॉन्ड बनता है जब पैरेलल होते हैं, तो यही सिमिलर केस यहाँ पे भी आएगा. These two electrons cloud they will combine and this will be in parallel. Thus in the ethane molecule the carbon bond consists of the sp2 sigma bond and one pi bond. Definitely ethane है तो एक sigma एक pi bond होगा, and between the p orbitals which do not used in the hybridizations and are perpendicular to the plane of the molecule of the bond angle 134. That we understand. The carbon bond, it consists of it is having the bond length of 134 picometer. ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी कंपेयर टू कार्बन सिंगल बॉन्ड. ठीक है, एंड नाउ द CH बॉन्ड इज sp2s sigma CH. नाउ वी टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो ये sp2s सिग्मा रहेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड है. ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये भी सारे सिग्मा बॉन्ड है, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है. ठीक है, अभी सारे सिग्मा बॉन्ड इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं ये इससे. ठीक है, एंड जिसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी 108 रहेगी इस वाले बॉन्ड की, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ इतनी रहेगी, और जो बॉन्ड एंगल रहेगा 117.6 डिग्री रहेगा, वाइल द CH बॉन्ड एंगल इज 112. द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स आर गिवन इन दिस फिगर. ठीक है, अब यहाँ पाई बॉन्ड कैसे हैं, px कैसे कंबाइन होंगे, पैरेलल टू. ठीक है, एक्सियल नहीं, पैरेलल. दिस विल बी द पैरेलल टू द देयर, तो देयर विल बी साइडवेज ओवरलैपिंग, एंड साइडवेज ओवरलैपिंग विल नॉट बी दैट मच स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई दिस विल फॉर्म द weak pi bond, and this will represented as the presence of the two clouds above this bond, कार्बन. ठीक है, इसलिए हम ऐसे दिखाते हैं, एक सिग्मा एक पाई रहता है और ये दो क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं above and below the plane. Now and if you want to see the 3D diagram in this plane, ठीक है, one plane will be the px above the plane रहेगा, and one the brown darkest brown this will be the below the plane. below the plane समझते हो आप, जैसे इसके ऊपर अबव द प्लेन और इसके नीचे बिलो द प्लेन, इस तरह से.